So, welcome you all after fourth session of lunch. Yeah, and then we request Madam and We request Rajesh. Professor Andu Pandey ma'am from Department of Commerce. She is from Motilal Nehru College. So, ma'am, please welcome her, Manovikas में. And co-chair में Rajesh Trivedi sir, consultant in rehabilitation sector. Rajesh sir, आप मुझे सुन पा रहे हैं? और डॉक्टर रनीजा सर को निकलना है. If you have any question, तो please आप सर के पास पूछ सकते. Quick query. If you have any query, then so good. Have any question you can ask. You're all still being examined for right questions. Proving. Combined for the end. How in terms of vision statement or CRE statement, what kinds of infrastructure is that can help access? I appreciate the question. The first mistake that many of them do is that we stop at the ramp at the front. And I also want to add to this is the wrongly made ramp is a far more danger than not intended. Because many times even people who design it, including us, as architects, only visualize moving up. We never visualize coming down. And that is sometimes very dangerous. That is one thing. Second is for persons with visual impairments and hearing impairments, instead of using the word total infrastructure or anything, everything is included in one word, experience. Right. So we have to design a holistic experience for every person so that at no step he or she is stigmatized, differentiated, or given any such kind of situation where they have to take a different. So as part of the experience, I would say the first part is the service providers have to be aware and sensitive, because without that, even if you do 1,000 things, they will not be effective. Number two, for people with actually now it's an inclusive answer. It works for all, but I would say to have acoustically better environments in all institutions is beneficial for all of us also, but it becomes more beneficial for people with hearing as well as visual disabilities, because for people with visual challenges, sound is perhaps a very strong sensory stimulus, and that channel has to be absolutely clear. That is one. Similarly, within hearing impairment, the assumption is that people are not hearing 100% is also wrong. There is some kind of a noisy environment, some kind of low hearing, and amplification, all the situations. To better acoustic environment is the first thing is what I would say. Third thing I would say is a good visual view. Because what happens is now we're sitting here, we call it sight lines. हमारा जो cone of vision है,
और जो room की illumination है, so it is an experience created by multiple factors in design, including how daylight comes into the room, what is the depth of the room, how do I create artificial illumination, especially जब हम LEDs को wrongly लगा देते हैं, तो these LEDs are actually coming in my eye, which is not good. The challenges of glare and इस सब के अंदर if I use the word visual contrast. So a total visual experience requires a sightline क्या determine करता है हमारा furniture. अगर मेरे आगे taller person है और मेरे पीछे छोटा height में है person, मेरा viewing angle change होता है. For most lecture theaters में मैंने देखा है, very rarely, and if at all I've seen good ones, they're so expensive. So I think the challenge is how within an affordable range we create an inclusive room, because प्रोजेक्टर आपका एक कोने में होता है, ब्लैकबोर्ड आपका बीच में होता है, तो जो बच्चा इस साइड में बैठा है, he or she is at the greatest disadvantage. And if you want to fix a seat for a person with disability, it is very stigmatizing. You can do that preferentially otherwise, that they can be given with grant orders. Now here, there can be a role of I will also not give you just the problem, also the solution. Now, आपको मालूम होगा कि आपने Microsoft Word तक में और तो नई चीजें speech to text conversion की facility. In fact, this साल, though I do not need any student with disability as a requirement, but for upgrading myself, what I do is I have started recording my lecture. I open the iPad notes, and whatever I am speaking gets typed in it automatically. If I spend a little more time on it, I can edit that. I can share it with the students. ये मैंने बोला। हाँ, इससे थोड़ा सा एक परेशानी है कि आपको बहुत संभल के बोलना पड़ेगा। ये हर चीज का एक written record बन जाए। But if you see it on a positive side, this transcription can help everyone. It's not just for those people. And if that text is available in a document file, then that text can also be read out by the machine. So if you see that way, you do not even have to spend 1 rupee on this technology, and the solution is available to us, but the teacher has to make 1 rupee per time. Either learn that little bit and condition oneself around it, or that's not possible. These are a couple of examples where I'm feeling the things happen, and there is the content usage. So I think we've become a little sensitive over a period of time that even if we use visual content, we try that suppose there is a video, either a transcription is available by captioning, or there is a support, alternative support, which is available to the students so that they can understand what is going on. So selection of content and ensuring that content is complying to the needs of children, I think is the third aspect. And fourth, I will use the word is color sensitivity of space, so that your focus is not. But now what happens is sometimes your window sill heights your are such that your mind goes outside. Sometimes you don't want to. It is also paradoxical because of the new technology system. तो पहले हम की शिक्षा को बोलते थे कि सूर्य की किरणों के जैसे ज्ञान को हम प्रकाश के साथ जोड़ते थे। आज हम सुबह 9 बजे आके पर्दे बंद करते हैं ताकि अंधेरे में हम वापस लाइट के पास। So sometimes I consider it paradoxical, but of course this is an adaptation of the new system. But I feel if you do mixed mode learning, your brain hopefully, though I'm not a scientist or have any evidence to this, but I feel variety helps you to adapt to different things, and your adaptation makes you even better in performance. Because sometimes one singular way may become too hard pressing on you, and you get into one mode of learning only. तो जरा सा भी अगर left right होता है तो adapt नहीं करता, because now all teachers have to teach different content and a different context. So I believe that is the third. और जहाँ पे sign language की बात आती है तो वहाँ भी question होता है कि design में क्या किया जाए. So important thing is
Of course, I'm right now not commenting. There are programs which are trying to imitate sign language using a AI based platform. उसका success rate अभी मैं नहीं कह सकता कि for full content translation कितना है. But assuming that also happens, the idea is you still need an environment where uh, the signing content is available in a clear presentation. अगर मैं उतना दूर से देख रहा हूँ तो कहीं मेरे gestures, because signing is not just hands, it's also visual or body, right? So these kind of things I feel sensitized अगर हो जाएंगे तो more possibilities. And besides this, I was recently in IIT Delhi, this lab. So there were around 250 plus products available for persons with visual impairments, including talking devices, including tactile graphics. So बहुत interesting है जैसे I learned when children with visual impairment were asked what was a tree to them. This one a couple of years back. They drew a circle. While we saw a thing in elevation, they saw something what they have wrapped around. So this cognitive perception is still a very, I think, still a big detail approach because I personally believe, coming from the lens of social thinking, is that cultures also have a lot of role to play. One is the scientific side of how this content can be delivered within a standardized environment. But मुझे लगता है culturally relatable examples, relatable context, relatable stories are also going to play an important role if we think we can customize knowledge to that child. Ultimately, हमारा intent यही है ना कि हर बच्चा सीख पाए और हर टीचर का भी intent ये है कि हर बच्चा समझ पाए. The challenge is how do you add those superpowers to your teacher and in that environment? And let's talk with minimum infrastructure. So वहाँ पे I feel all these kind of things can hopefully make a difference. But this law I think I would think. एक और पॉइंट उसमें ऐड कर सकते हैं सर, जब बिल्डिंग की जो बात हो रही थी ना, तो पॉइंटेड बिल्डिंग अगर होता है तो चोट लगने की चांसेस ज्यादा होते हैं फिजिकली. तो ब्लाइंड इंस्टीट्यूशन में इनफैक्ट दैट आर्टिकुलर फॉर एग्जांपल दुनिया सब कुछ बाहर से राउंडेड है, कोई टक्कर नहीं खाता है तो चोट कम से कम हो जाए. तो आप उसका उदाहरण भी ले सकते हैं. हर चीज में आपके फोन के एजेस देखते हैं. इसको हम ड्राइंग की लैंग्वेज में फिलेट बोलते हैं. फिलेट कर्व FILLET. और इसके नाम से कैड में कमांड भी होता है. तो हम फिलेट रेडियस देते हैं कितना कर्व कर. उस सड़क में भी आप देखते हैं कॉर्नर्स कर्व होते हैं. लेकिन इस चीज में वाकई मुझे लगता है एक सेंसिटिविटी की बहुत जरूरत है. बहुत सी जगह अभी भी हम एजेस के साथ खेलते हैं और डेफिनेटली एनी शार्प एज और एनी अनट्रीटेड एज can actually be a big issue. So I think this is what I would say. Even furniture, after a molded furniture, is pretty safe because it has software operating. 10 years और 2 की गोल है. फिर जो फादर मदर दोनों ही आपकी कहते हैं बच्चा तो हर टाइम मतलब हाईलाइट ड्राइंग और बिल्डिंग स्केच ही बनाता है. तो बच्चा मेरे पास जब याद आ रहा है कि मेरे लिए अब ये चैलेंज है कि मैं उनको आर्टिफिशियल उनका एरिया और इंटरेस्ट खोलूं. और जैसे भी हाइपर होता है कुछ भी होता है तो मैं जैसे उसको कोई लाइन ड्राइंग का स्केच देती हूँ तो एकदम अपने फेस पे बैठता है उसको ड्रॉ करने लगती हूँ. लेकिन चैलेंज बहुत भी कि अब उनको कैसे हम गाइड करें तो क्या चीज से कैसे स्टार्ट करें ताकि इम्प्रूव कर पाए. Which is the disability that people autistic child. So of course उसमें hyper या hypo में कुछ हो सकता है. तो यही बात आ गई ना देखिए कि क्योंकि उसके घर में दोनों आर्किटेक्ट हैं और उन्होंने एक ही स्टाइल इम्पोज करा. ऐसा हो सकता है कि वो एनेबल तो करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं एनेबलमेंट के अंदर ही उसकी लिमिटेशन है. तो आई पर्सनली फील इसमें नेक्स्ट कदम उठाने के लिए पहले पेरेंट्स को साथ में लेना जरूरी है. Because that you and I definitely would value that for the child's total development, only drawings cannot go, only sketch cannot go. It is good, but how we can take advantage of where he is good at, we can supplement the textual and the other understandings. Because the world will have many other dimensions. Suppose he has to read everything.
Can you understand? उसी तरह से आप सबको तो फिर ज्ञान होगा कि हमारे लर्निंग स्टाइल्स भी अलग है। हम लोग कुछ लोग हैं जो वर्बल लर्नर्स हैं, कुछ विजुअल लर्नर्स हैं, कुछ न्यूमेरिक लर्नर्स हैं, कुछ मिक्स मोड लर्नर्स हैं। तो हमें कोई भी चीज समझ तब आती जब वो मेरे लर्निंग स्टाइल के साथ मैच। मुझे लगता है अगर बच्चे का लर्निंग स्टाइल थोड़ा सा समझा जाए और बच्चे के अंदर दूसरे लर्निंग स्टाइल्स की पॉसिबिलिटीज डेवलप एक्सप्लोर की जाए ना, और उसके साथ में पेरेंट्स को, बिकॉज आई बिलीव दे आर एजुकेटेड पेरेंट्स, दे विल अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड कि देयर इज अ लर्निंग बियॉन्ड द विजुअल लर्निंग आल्सो। बिकॉज जहाँ पे इंटेलिजेंस की बात है, जहाँ पे सेंसिटिविटी या सेंसरी स्टिमुलेशंस की बात है, तो मुझे लगता है कि होपफुली दे विल अप्रिशिएट एंड आई होप that they are creative enough to then start working also on it. तो मुझे ये लगता है कि it's not just the child, it's the whole culture that because family is the immediate support and it has to start, it can start from them. क्योंकि आप उनको सिर्फ अगर इतना ही बता पाए कि ये चैलेंज है और ये रास्ता है, आई एम श्योर पेरेंट्स आर इंटरेस्टेड एंड आई थिंक A bit more complicated than that, but that's it. Now, you want to get out now. Psychosocial, mental health, behavioral, actually have come. Because these two ladies, they are really what it means. So please, Kanishka, I request you to please present. Good afternoon all. I am Kanishka. I am working as a media designer at Manovikas. First of all, I want to share my some experience. मैं आपसे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं मनोविकास में पहली बार आई थी, तो मुझे डिसेबिलिटी सेक्टर के बारे में कुछ नहीं पता था। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे दिमाग में ये एक पिक्चर बनी हुई थी कि व्हीलचेयर और हैंडीकैप यही डिसेबिलिटी है, अदरवाइज और कुछ है ही नहीं इसके अलावा। फिर मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि काफी सारी डिसेबिलिटीज होती है, रीडिंग डिसेबिलिटी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। बट डिसेबिलिटी सेक्टर के अलावा अब कॉर्पोरेट सेक्टर में बात करें तो आपको डिजाइन के लिए बहुत सारी चीजें होंगी कि आप थीम, बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल थीम, डिफरेंट स्टाइल के फॉन्ट्स, डिफरेंट स्टाइल की बहुत सारी चीजें, आपका स्टाइलाइज ही होगा हर चीज। बट यहाँ आने के बाद हमें हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम सामने वाले के लिए उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए हर चीज बनाए, हर चीज को क्रिएट करें। अब सिंपल चीज बनाना सच में बहुत मुश्किल होता है। लोग कहते हैं कि सिंपल चीज तो यूं ही बन जाएगी, बट वो चीज बहुत इटैलिक फॉन्ट्स होते हैं, बहुत सारे डिजाइन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट आप जब नॉर्मल चीज को देखोगे, अरे ये बहुत सिंपल है, तो यूं ही हो जाएगा। बट आप ये देखिए कि आपको डिसेबल पीपल के लिए उसको डिजाइन करना है, उनकी सोच के हिसाब से डिजाइन करना है। तो किस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं, उनके लिए सबसे पहले तो इजी टू रीड होना चाहिए। हम नॉर्मल चीजें नॉर्मल बना तो देते हैं पिक्चर, बट उनको वो चीज समझ आ रही है नहीं आ रही, वो चीज तो हमें नहीं पता ना। हमें उसको ये हाईलाइट करना है कि सामने वाले को, डिसेबल पर्सन को जो भी है समझ में आए। उसी के हिसाब से हमें बहुत प्लेन फॉन्ट, बहुत प्लेन सरफेस, प्लेन क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर, बहुत ही हर चीज क्लियर कॉन्सेप्ट में रखना जरूरी है, बहुत ज्यादा। क्योंकि इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें एक पिक्चर दिखाई देती है, हाँ वो पिक्चर है, बट उन्हें ये हमें समझ आता है। और फिर तो ऐसी चीज होती है कि कुछ पिक्चर्स को हमें भी इतना क्लियर नहीं होती है कि हाँ कि ये चीज क्या है, तो उन्हें कैसे क्लियर होगी। तो आज का जो मेरा कॉन्सेप्ट है कि इजी टू रीड के माध्यम से हम किस तरीके से उन लोगों को समझा पाए कि हाँ ये चीज ये है, ये चीज ये है, उनको बहुत क्लियर, हर चीज का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर। तो इसके लिए मैं आपको कुछ शेयर करना चाहती हूँ।
accessible information communication and learning resources. अब बात की जाए तो हायर एजुकेशन अब नॉर्मल बच्चों के लिए तो चलो ठीक है बहुत सारे पिक्टोरियल्स होती है मगर हायर एजुकेशन में आपने बहुत कम ही पिक्टोरियल्स देखे होंगे वहाँ पर पिक्टोरियल्स नाम की चीज ही नहीं होगी हाँ ठीक है थोड़ा बहुत है बट हमें वहां पर भी उनके लिए एक्सेसिबिलिटी क्रिएट करनी है accessible course material digital version of textbooks बहुत digital type की होनी चाहिए course material in accessible format such as electronic text e-text audio video use plain language and clear formatting in course material to make them easier for individuals with IDD to understand to enhance learning experience for students with IDDs use multimedia resources such as videos with caption and audio description. Accessible learning management systems (LMS). Communication support picture schedule जो हम टाइम टेबल्स वगैरह बनाते हैं वो भी पिक्टोरियल हो तो वो ज्यादा अच्छा है उनके लिए समझने में ज्यादा इजी रहेगा visual aids and communication board speech generating devices communication apps supportive learning environment accessible assessment evaluation implement inclusive assessment strategies that accommodate students with IDs diverse learning styles provide their feedback and support to students with IDD universities can support IDD success so accessible resources and inclusive environment. Importance of accessible information and communication for individuals with IDD. Equal access to information. Enhanced communication, empowerment and self-advocacy. Inclusive education, access to healthcare services. Social inclusion and participation, strategies for creating accessible learning material for IDD, use plain language, provide visual support, utilize multimedia resources, offer alternative formats, ensure digital accessibility, provide clear instruction and structure, offer supportive resources. Promote inclusive teaching practices, provide flexibility and accommodations. Incorporating alternative formats such as easy audio descriptions, and large prints. Incorporating alternative formats such as easy audio description and large prints, it is essential for ensuring that the learning materials are accessible to individuals with intellectual and developmental disabilities. एसिडिक मटेरियल्स मैं आपको कुछ एसिडिक मटेरियल्स शो करवाना चाहती हूँ सबसे पहले फॉर्म जैसे आप बैंक में जाएंगे बैंक में तो हमें भी कुछ फॉर्म्स बिल्कुल समझ नहीं आते हैं तो हम कुछ ऐसा एक्सेसिबल बनाना होता है जैसे नेम सामने वाले को नेम भी अच्छे से समझ आ जाए नेम फादर नेम मदर नेम हमें पिक्टोरियल टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज और बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वो उस हिसाब से हम डिजाइन करते हैं नेक्स्ट है इजी रीड गाइडलाइन इस गाइडलाइन में किस तरीके से इजी रीड बनाया गया है वो सब कुछ इसमें है जैसे कि हमें किस तरीके का स्पेस किस तरीके से पिक्चर और टेक्स्ट में क्या स्पेस होना चाहिए प्लेन टेक्स्ट होना चाहिए किस तरीके का टेक्स्ट यूज करना चाहिए सब कुछ आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा किस तरीके की पिक्चर यूज होना चाहिए ये सब मटेरियल आपको हमारी वेबसाइट पे प्रोवाइड हो जाएंगे ऑडियो नेक्स्ट है ऑडियो डिस्क्रिप्शन लार्ज टेक्स्ट मटेरियल accessibility guidelines and standard collaboration and partnerships. Thank you. So if you want to develop easy read, there is a guideline, and I think there is a course also on our portal for free.
कि कैसे आप इजीली कोई भी चीज डेवलप कर। यस पूजा। So I can request Pooja to input your things. Good afternoon, everyone. In this session, we are going to talk about enhancing accessibility of digital technology and platform. We are all aware of digital technology and we are using it in daily life. But our CIDD are facing many problems in using the digital technology. Here we are as an organization like Manovikas Charitable Society. It is our duty and responsibility to take care of the PIDD, whether they are using it properly or not. There are some we are going to talk about the barriers our PIDD are facing in using the technology. Before solving the problem, we need to know the problem and the barriers. So there are some first accessibility audit and assessment. Second, designing inclusive interfaces. Third, alternative text and descriptive levels. Clear and simple language. Keyboard accessibility and navigation. Accessible technology and support services. Continuous improvement and feedback. There are some barriers. Now we will talk about how we can use to solve these barriers. Providing assistive technology and software of digital access. First is screen reader. Second, speech to text software. Third, word prediction software. Fourth, alternative keyboard and input devices. Next, text to speech software. Next, magnification and screen enhancement tool. Next, symbol based communication system and accessible educational software. There are some software and extension, but here I will give some demo of some software. Screen reader software. I have installed a software and NVDA. It is used as a screen reader software. We have to install it from Google Chrome or any Mac device. ये सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं एज ए स्क्रीन रीडर। जहां भी हम अपने कर्सर को ले जाएंगे, ये सॉफ्टवेयर हमें बताएगा कि वहां पे क्या लिखा है या फिर वो क्या टूल है। इसको लगाओ।
क्या होगा स्लाइड को बंद करके मॉडिफाई करके टाइपिंग करना शुरू करो। इसमें ये नहीं लगा, इससे आवाज आती है। चलो इसमें आ रही है, इसका तुमने वो लगाया होगा ना। हाँ, इसका आवाज का वो रन कर। ये कैसे वो उससे आवाज दे रहा हूँ। लगा, यस। आवाज कम Application. Now, the last document, application, document. Document content that is not needed for the students. The instructor of the job, the whole sentence, the whole, whatever the host, whatever the host done fairly. The instructor, working. नेक्स्ट इज स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर। इसका एक एक्सटेंशन आता है जो हम क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हम कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे Section working, attack. स्पीच में करके देंगे। Is selected. But the universal, space, space. Well, just, maybe we just finish up. Talk about this, the size of the like that. How are you? नेक्स्ट है वर्ड प्रेडिक्शन सॉफ्टवेयर। इसमें हम कोई भी लाइन अगर हम लिख रहे हैं उसके नेक्स्ट हमारा क्या वर्ड आएगा वो खुद ही प्रेडिक्ट करके बता देता है जो भी सुटेबल होता है। नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिव कीबोर्ड एंड इनपुट डिवाइसेस, जो हम अलग से कीबोर्ड लगा सकते हैं जिसमें नंबर्स भी बड़े बड़े होते हैं और कलर्स भी अलग अलग होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे फोटोज लगाई है इस टाइप के। टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर, इसको यूज करने के लिए हम विंडो प्लस एच करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है। हम जो भी बोलेंगे वो यहाँ पे लिख देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्लाइड में ही लिख के दिखा देती हूँ। टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर, Even it comes in your electronic WhatsApp में भी कर सकते हैं। आपका फोन पे भी टॉकिंग डिवाइस है और आप उसमें कर सकते हो उसको एक्सेसिबिलिटी पे जाएंगे उसके बाद टॉकिंग When you just see that the Word और Excel, ये तो Google स्लाइड है और इवन की Word में भी that ऊपर में एरो एक दिखा रहा है सबसे बैकवर्ड ये एक्सेसिबिलिटी। You switch on there, you will get a lot of options. फॉन्ट साइज को भी बड़ा कर सब चीज बन सकता है यहाँ पर। But how many of you are using this accessibility feature while you are developing the PPT for your student, while you are developing any content for your student? That is very important. Yeah, actually, बहुत important सवाल है। I would say, how many of us in any capacity is using at least some of these you are right? And ये सवाल अपने आप से पूछ सकते हैं। And one more thing कि आप जो भी चीज लिख रहे हैं अगर वो सिर्फ यूपी क्योंकि हमारे ही जो लोग हैं जितने लोग वही पढ़ेंगे तो वो आपकी एक रूल है। आपने जो भी चीज कंटेंट whatever the digitally you created, it can be read by anyone, it can be it goes to anywhere. तो जो भी बनाया है उसको आप थोड़ा सा एक्सेसिबिलिटी फीचर डालेंगे तो सभी पढ़ सकते हैं। Even your article, even your PPT, so make it with the accessibility. Am I right, sir?
and UX is very important. The user design, user experience is very important. कि आपको अगर वो जो आपने accessibility feature डाला है, तो whatever the Kanishka she said कि she makes the easy read. तो once she makes the easy read, वो हमारे सारे self advocates को जाता है. और उस सेल्फ एडवोकेट्स वहां से 50 बार बोलते कि नहीं ये फोटो नहीं समझ में आया, ये कलर समझ में नहीं आया, ये फॉन्ट्स कैसा लगा दिया, पढ़ने में नहीं आ रहा. So that experience counting is very important. उसको UI और UX की UI UX LILX बोल देते हैं. yes. LILX will mean learning interface and learning experience. And also because this connects you to type interface and Like इनफैक्ट हम लोग जब किसी क्लाइंट को हम लोग मैसेज देते हैं और पिक्चर शेयरिंग करते हैं तो पिक्चर इसका पूरा डिस्क्रिप्शन हम लोग नीचे और text. हाँ देते हैं उनके लिए ताकि वो समझ पाए कि क्या है. नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन एंड स्क्रीन एनहांसमेंट टूल. ये भी हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में इनबिल्ट होता है. सर्च पे ऑप्शन जाके हम अगर मैग्नीफाइड सर्च करेंगे तो ये आ जाता है. इसके साथ साथ हम जहां भी कर्सर ले जाएंगे ये उसके बारे में बोलता है. Settings. इसे जूम तो कर ही सकते हैं हम. साथ में हम जो भी इस पे टच करेंगे ये सारा कुछ वहां पे बोलना स्टार्ट कर देता है. Ganesha. हाँ, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं कंप्यूटर के अंदर ही. Ganesha, slide show shift bubble edit view. Insert program slide arrange tools extensions help accessibility 60. नेक्स्ट सिंबल बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम. हम बहुत सारे सिंबल के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं. जैसे ये कुछ एग्जांपल है सॉफ्टवेयर के. इसको यूज करके भी हम बच्चों के लिए वो लर्निंग मटेरियल या फिर वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं. Emoji is very, very good communication for PID. Actually, yes. मैं तो बड़ा अच्छा. एक्सेसिबल और एजुकेशनल सॉफ्टवेयर. इसके एग्जांपल है टैबी डायनो बॉक्स, स्मार्ट बॉक्स और असिस्टिव वेयर. इसके अलावा हमने अपनी वेबसाइट भी ऐसी बना रखी है जो पीआईडी बच्चा आराम से इसको यूज कर सकता है. ये जितनी भी हमारी पिक्स लगी हुई है इसके साथ एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट हम यूज करते हैं जिस पे भी हम क्लिक करेंगे वो उसके बारे में बोलेगा कि ये पिक्चर किसकी है, उसको डिस्क्राइब करेगा कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं. अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं एनवीडीए को Consent. Initials RC have a logo green color and RC and a red color. Pink college symbol success like. Cover of pink college program, 2 percent college to college. Can go to this website. Pink college symbol success like. Now, W3C said ना W3C कंप्लेंट बता रहा. WCAG जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और Services. वेबसाइट्स स्टैंडर्ड है. असिस्टेबल वेबसाइट के लिए इसकी गाइडलाइंस है जिसको ध्यान में रख के ही हम अपनी सारी वेबसाइट को बनाते हैं. WCAG. इस गाइडलाइंस को ध्यान में रख के ही हम अपनी सारी वेबसाइट को बनाते हैं. इसमें 4 पिलर्स दे रखे हैं जिसका डिटेल्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा. ये WCAG के डिटेल्स हैं, सारी गाइडलाइंस इसमें प्रोवाइड है. वैसे क्वेश्चन अगर सब विज्ञान है और आपके अंदर why do I still hear foreign accent in the voice over? Options. You can be No, so that's what I'm certain saying. changes. I know. So why do we use that here still at any point? नहीं वो उससे चेंज नहीं किया हमारे बड़े ने. है ना? हाँ उससे change. हम विधि क्या करते हैं? Most Indian like audio material, video material has foreign accent or white speech. Options are That's the female voice is better than the male voice. Most of the time मैंने इसमें इंग्लिश इंडिया ही डाला है, but वो all I'm ऐसे not worried about yellow female voice. But accent. I am worried about the speed and the accent. Yeah, accent. no, but what you find even you go for the Microsoft Word
or even the window, They still have. they have still same voiceover. And the changing to the Indianizing the all the voiceover and all, it required the most the funding. But I mean, I think what- so many Indians were in there. बहुत कम है। You know what I mean? वो The white skin में सारे program white skin में अभी नहीं, वो बहुत कम है। Indian still have variants, South Indian. बहुत सारे हैं। तो मैंने इसमें चेंज किया, यहाँ पे लिख रहा है रवि इंग्लिश इंडिया, बट ये बोलता है एफिलिएट। NBD हिंदी वर्जन में टाइप करेंगे। हाँ, इंडियनाइज्ड होगा। हिंदी का तो बातें हैं, हाँ ऑप्शंस है, मगर उनके डिफॉल्ट में क्या चीज़ है कोई हमारे पास में है कि डिफॉल्ट में उनके इंडियन लैंग्वेज रहेंगी। तो our इंडियन एक्सेंट को इसलिए रखा कि इंडियन our message is very simple. While as a teacher, while you are thinking about the accessibility, so think the accessibility not in the physical sense, as sir was saying कि ठीक है पूरा वो पूरा सब तरह से देखता है, उसको improve करिए कि हम कंटेंट में भी, हम अपने पीपीटी में भी, हम अपने पढ़ाने के तरीके में भी, everywhere to be. That's yeah. Great, thank you. Yes. So any question? वो एकदम सब चीज शेयर करेंगे। आपने जब हमारे ऊपर रजिस्ट्रेशन कराया होगा ना वेबसाइट पर, तो वो कोर्स कंटेंट है। दिस इज नॉट द वेबसाइट कि हमने गए और वो कि यू हैव enrolled in the course. So each and every content you will find, जैसे आप ऑनलाइन पढ़ते हैं ना, वो सारा कंटेंट आज से कल तक में अपलोड हो जाएगा, सर का भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, तो वो आप यू कैन सी इट देयर। ओके, yeah, so we can start the next session. Yeah, with the consent of our chair and co-chair. So you just initiate and the session, and then this is session. So we can give them the opportunity to speak, listen to first, and then we. मैम आपके काम में मैं क्या so अब ये मैंने Thank you. Thank you, sir. अच्छा Bye. एक सब्जेक्ट सर शुक्रिया केपी हो गया हाँ सर केपी को करके एनपीपी करना You're getting KV हो गया है। केपी हो गया है